हम एक्साइटेड फील कर रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, यू नो, हम जो कुछ हो रहा है इसका असल सोर्स क्या है, हमारी इन एक्सपीरियंसेस का असल सोर्स क्या है। देखिए होता क्या है कि हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, दुनिया में हमारे साथ हालात होते हैं, वाकयात होते हैं। जब वो हालात और वाकयात होते हैं, हम उन हालात और वाकयात को इंटरप्रेट करते हैं, दूसरे लफ्जों में हम उनके बारे में सोचते हैं। जब हम उनके बारे में सोचते हैं, उस इंटरप्रिटेशन के नतीजे में अगर हम अच्छा सोच रहे होते हैं तो हमारे अंदर अच्छी फीलिंग्स आती हैं, अच्छे इमोशंस आते हैं। अगर हमारी इंटरप्रिटेशन अच्छी नहीं होती है तो हमारे अंदर फीलिंग्स जो आती हैं वो भी अच्छी नहीं होती, हमारे इमोशंस भी अच्छे नहीं होते। मगर अब इस इंटरप्रिटेशन के बाद जो ये फीलिंग्स आई, फिर इसकी बेसिस पे हमारे एक्शंस होते हैं, और उस एक्शंस के नतीजे में जो हम काम करते हैं वो नए हमारे इवेंट्स बन जाते हैं, हमारे लिए रिजल्ट्स आ जाते हैं। नाउ अब हो क्या रहा है कि जो साइकिल एक्चुअली चल रही है वो क्या हो रही है कि इवेंट्स के बाद नेक्स्ट स्टेप इज इंटरप्रिटेशन। मगर ये इंटरप्रिटेशन, ये जो थिंकिंग है, ये हमारी लाशऊरी लेवल पे हो रही है, अनकॉन्शियसली हो रही है। एंड सिंस इट इज हैपनिंग अनकॉन्शियसली, we don't realize this, and what we tend to do is we start making a wrong assumption, and the assumption we make is कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है इसकी वजह जो है ये हमारे हालात, इसकी वजह जो है हमारे वाकयात है, and we miss a major step, and what we do is जैसे कि ये मेरे साथ फलानी चीज हुई ना, उसकी वजह से मुझे ऐसा हो रहा है, ये मेरे साथ फलाने ने ऐसा किया था, which was an event, इस वजह से। सो आजकल ये ये पेंडेमिक चला हुआ है दुनिया में, इसकी वजह से आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। मेरा कारोबार खराब हो गया, इसकी वजह से आई एम फीलिंग दिस। सो मुझे मेरे बचपन में किसी ने ऐसे करा था, इस वजह से आई एम फीलिंग दिस। मेरे साथ फलानी चीज हुई, इस दिस इज अ मिस्टेक दैट वी मेक, दिस इज अ मिस्टेक दैट वी मेक। दिस इज लाइक इफ इट्स लाइक हम एक सिनेमा में बैठे, हमारे सामने एक मूवी चल रही है, उस मूवी के अंदर एक सीन आता है, उस सीन के अंदर जो है कोई जज्बाती सीन आता है, हम जज्बाती हो जाते हैं, कोई इमोशनल सीन होता है, हम इमोशनल हो जाते हैं, हम अनकॉन्शियसली उसमें इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम इस चीज को भूल जाते हैं कि जो सीन हमारे सामने चल रहा है, क्योंकि हमारी फीलिंग्स जो है वो रियल है, क्योंकि हमारे जो जो एक्सपीरियंस, इमोशंस है वो रियल है, हम इस गलत फहमी में आ जाते हैं कि जो हमें नजर आ रहा है वो सीन भी रियल है। जो मैंने बात की कि आजकल लोग अर्थ गर्ल को देखकर जो है दे स्टार्ट थिंकिंग कि ये जो कुछ कैरेक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं एज इफ दे आर रियल, दैट्स नॉट, दैट्स अ मिस्टेक दैट वी आर मेकिंग। अच्छा, अब होता क्या है कि जो हमारी अपनी सोच होती है, फॉर अस इट्स रियली हार्ड फॉर अ नॉर्मल पर्सन, with proper training and proper understanding, it's really hard for a person to really question their own thinking. And we buy into our own thinking, believing कि हमारे साथ जो भी हो रहा है it's because of something else happening outside of us. ये फलाने शख्स ने मेरे साथ इस तरह बात करी, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, फलाने शख्स ने it's like अगर फर्ज करो किसी शख्स ने आपके सामने कोई बुरे अंदाज में बात की हो, but you never thought of it, do you really feel bad about it? So ये जो चीज, I don't know why I feel anxious, I don't know why I feel depressed, I don't know why I feel this, why I feel that. The answer is very simple. You feel this because you think about it that way. So we basically experience our own thoughts, our own thinking. When we work with people, people come to us for coaching, people come to us for therapy, people come to us for counseling, for any kind of change work, because they want to change how they're feeling. And when they tell us about their stories, मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ था, मेरे साथ माजी में ऐसा हुआ था, मेरे बॉस ने यूं किया, मेरे अब्बा ने यूं किया, मेरी अम्मा ने यूं किया, मेरे फलाने शख्स ने यूं किया, मेरे साथ फलाने हालात हुए. And what they will not be telling you is they're basically experiencing this. This is the real thing that actually causes them to feel what they feel. Okay? And since it's out of their awareness, it's not in their awareness, your job as an NLP practitioner, if you're working with people, is to go and work with this. And once you start working with this, and you will learn this, inshallah, this program, you will start understanding. And the same thing goes for you. If you want to change your life, start paying attention to these interpretations. The thing is this, just because you learn to see some images and associate some meaning to them, that doesn't mean that's the only meaning.
Okay, there are many other possibilities. So this is where the change needs to be made. Okay, even though people will say, I want to change how I feel, I have this fear, I want to overcome this. Okay, I have this lack of finances and I want to change this, but what they need to really change is this. Okay, so and we'll work on this. So the next thing and the last thing for this is so हमारे जो results हैं, as I said, they are coming from the actions, और इन actions के पीछे हमारे जो moods हैं, और इन moods को, so how do we know? मैंने अभी आपसे कहा कि what we actually experience is the thought in the moment. If you are thinking positive thoughts, you cannot be feeling bad. If you are thinking negative thoughts, it's hard that you're to believe that you're feeling good, because what you're feeling is the thoughts in the moment. Whatever is going on here in this moment is what you're experiencing right now in this moment. And जो mistake जैसे मैंने कहा वो क्या होती है, वो mistake ये होती है, we tend to make we tend to believe कि जो मेरी thoughts हैं ये real है. हमारे think of it कि यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है, और वो जो कैमरा है वो यहाँ से एक प्रोजेक्शन कर रहा है. जैसे सिनेमा में अगर आप गए हो तो सिनेमा में पीछे एक प्रोजेक्शन बूथ में कैमरा रखा हुआ है, वो कैमरा जो है स्क्रीन के ऊपर इमेजेस थ्रो कर रहा है. सो एक कैमरा लगा हुआ है जो यहाँ पर हमारे है, और हमारी जो मेंटल स्क्रीन है उसके ऊपर वो इमेजेस थ्रो कर रहा है. ओके, और वो जो इमेजेस थ्रो कर रहा है वो इमेजेस जो हैं दे आर बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस लर्निंग्स, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, व्हाटएवर we have gone through, and making all of those computations and calculations and showing us those images. And as we are seeing those images of the past or even of the future, things that have not happened or things that will never happen, but because हमारा ज़हन जो उसको project करके हमें यहाँ पर दिखा रहे, and we are seeing them and not even realizing some of the movies that we are running, someone else actually left them for us. We didn't even create them. Maybe an elder just gave us that movie and we bought into that. And we're just running their movies or their audio tracks. And we're listening to that inside our own heads and seeing it inside. And since we have real feelings, and since those feelings are honest, those feelings are genuine, we are making the mistake that our thoughts say they're also true. That's not the case. That's a mistake that we make. ओके, और ये जो हमारा जहन होता है इसके फंक्शंस में से एक चीज ये होती है, हम जिस चीज पर फोकस करते हैं वो चीज हमारी जिंदगी में, हमारे तजुर्बात में, हमारे एक्सपीरियंस में बढ़ती चली जाती है. हम जिन चीजों पे फोकस करते हैं वो चीजें हमें लाइक दे बिकम more and more real to us even though they are not. So whatever happened in your past, no matter how painful it was, here's the fact: it is over. O-V-E-R, over. If something happened in your life when you were 5 years old, when you were 10 years old, when you were 15 years old, the fact is you're not 5 years old anymore. So stop behaving and acting like a 5-year-old child. Become an adult. Think like an adult. Okay? Just don't when you come up with this fight or freeze or flight, those kind of responses, realize that's something that your reptilian brain is just stop it. Okay, bring it in here and start thinking and remind yourself this is not real. It's a figment of your imagination. It's a projection from your mind. It's not true, and it's probably something that someone else left, a garbage. So because अब होता ये है कि ये जो चीज होती है, like based on these experiences and these thoughts, we create stories. And we buy into our own stories. We are so like we are all heroes and heroines in our own stories. And then someone else is the villain. That villain could be our spouse. That villain could be our in-laws. That villain could be, our past. That could be anyone, by the way. It's like our bosses, our neighbors. It's so much easier to think that I'm a victim and someone else is causing all the problems. It's so much easier. However, unfortunately, that doesn't solve any problem.
ओके हमारा जो एक माइंडसेट बन गया है वो ये कि हम ये समझने लगे कि हमारे साथ जो भी जिंदगी में हो रहा है हम कोई दूसरी कौम हमारे पीछे पड़ी हुई है, कोई दूसरा मुल्क हमारे पीछे पड़ा हुआ है, ये हिंदुस्तान करा रहा है, ये इजराइल करा रहा है, ये अमेरिका करा रहा है, ये इंग्लैंड करा रहा है, हम सब बिल्कुल फरिश्ते हैं। okay? हम बिल्कुल मासूम है, हम एक मासूमीन की कौम है और हम मासूमों के साथ सारे लोग जो है ज्यादती कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली it has not helped us and it has not worked. So what we do is we start creating stories and we express those stories in words. Okay, so and through those stories we are telling ourselves stories, we are telling other people's stories, and the more we tell those stories, and every time we tell those stories we distort those stories, we delete something, we generalize something, we add something to it, we subtract something from it, and we keep doing that, and the more we do it, the more we repeat, the stronger those programs become in us. और उसके बाद फिर हम एक चीज कहते हैं, ये बात मेरे जहन में बैठ गई है। वो बैठी नहीं है जनाब, आपने बिठाई है। ओके वो बिठाई कैसे है, उसको दोहरा दोहरा कर। ओके इतना मासूम बनने की कोशिश ना करें। आपने अपने आप अपने साथ किया है। कभी कभी लोग होता है, I don't work with children anymore. Sometimes people come and then they have spoiled their child, done the worst possible job they can, and then they say कि जी कामरान साहब जी मैंने तो जो करना था कर लिया, आप इसको hypnotize करके ठीक कर दें, आप इसको प्रोग्राम कर दें। I'm sorry, I can't do that. Okay, you have to stop yourself first. So stop telling yourself those crappy stories that you may be telling about yourself, about your past, your finances. If you're experiencing bad for anything in your life, it's not because of what happened in the past. It's because what you're doing right now in this moment. You are experiencing your own thoughts. So, aaj ke liye, this is all that I wanted to share with you. If there are any questions, I'll take those questions and I'll answer your questions if I can. And inshallah ta'ala, we will continue tomorrow and we will have some more things. Because we had an introduction का भी हमारा एक section था, तो and remember this, by the way, ऐसा नहीं होगा कि class हमारी हमेशा